Hello, fantastic folks. A very warm welcome to your SST class with your teacher Prachi. And today, children, we are going to start a new chapter, chapter number 3 of geography. So, what is that chapter? The changing earth. हमारा अर्थ जहाँ हम रहते हैं, what are the different forms in which it changed? कैसे इसमें बदलाव आया, कैसे changes आए अर्थ में. So what you will learn in this chapter: continental drift, volcanoes, earthquakes. हम इन तीन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now let's begin. All activities which occur inside the earth affect human beings in many ways. Now, अर्थ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो कुछ भी चेंजेस होता है, जो कुछ भी अंदर चलता है अर्थ के, उसका इफेक्ट किस पे होता है? ह्यूमन बींग्स पे होता है और बहुत तरह से. For centuries, it was believed that the distribution and proportion of land and water on the earth's surface has always been the same and that the continents were fixed in their position. बहुत टाइम से यही बिलीव एक है, ये माना जाता है कि ये जो लैंड और वाटर का जो प्रोपोर्शन है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, वो बराबर रहते हैं एंड जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी जगह पे एक फिक्स पोजीशन पे हैं. बट द अर्थ डिड नॉट ऑलवेज लुक द वे इट लुक्स टुडे. लेकिन जो अर्थ है हमारा, वो जो आज हमें दिखता है, जिस तरह से आज जिस तरह का दिखता है, वैसा पहले नहीं दिखता. इन अदर वर्ड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स 1 billion years ago was in a totally different location than it is today. एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 1 billion year ago, 1 billion year पहले कैसा था? वो एक अलग ही लोकेशन पे था. उसका जो लोकेशन है वो अलग ही था. आजकल जिस लोकेशन पे वो दिखता है वहाँ पे नहीं. हाउ डज दिस हैपन? अब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? एंड व्हाई डज दिस हैपन? लेट्स टेक अ लुक. ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो यही चीज आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? The Earth was formed 4.6 billion years ago. हमारा अर्थ जो बना है वो कितने साल पहले बना है? 4.6 billion years ago. And it has been changing ever since. और तब से अब तक उसमें कुछ ना कुछ changes होते हैं. One reason it changes is because of continental drift. उसका एक रीजन जो है, जो अर्थ में changes हो रहे हैं, वो है continental drift. Alfred Wegener was the meteorologist who proposed the continental drift theory in the early 20th century. Early 20th century में Alfred Wegener ने, एक जो कि meteorologist हैं, उन्होंने एक continental drift theory के बारे में बताया. His hypothesis proposed that the continents had once been joined and over time had drifted apart. उनकी थ्योरी के हिसाब से जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक साथ मिले हुए थे और ओवर अ टाइम पीरियड वो धीरे धीरे अलग हो गए. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द थ्योरी ऑफ हाउ द कॉन्टिनेंट्स मूव ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. और इस थ्योरी में क्या है? इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये है कि किस तरह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अर्थ की सरफेस पे मूव करते हैं. He proposed that millions of years ago, the land on Earth was all hooked together in one supercontinent called Pangaea. Now, according to Alfred Wegener's theory, क्या बताया गया है कि ये जो हमारा अर्थ है कि millions of years ago ये जो लैंड था, अर्थ पे जो लैंड है, वो एक साथ हुक था, एक साथ अलग अलग नहीं. It was together in one supercontinent. एक ही supercontinent था जिसको कि कहा जाता था Pangaea. Greek word pan means all and gaea means earth. So all earth, it means all earth.
he said that over the years the land broke apart and became separate continents. And he also said that पहले तो ये एक ही लैंड था, एक ही अर्थ था, ऑल अर्थ, एंड ओवर द इयर्स ये जो लैंड है ये धीरे धीरे टूट गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स. दिस इज कॉल्ड वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. इसे ही वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है. Wegener's theory was improved upon by adding the concept of sea floor spreading. और इस थ्योरी को और इम्प्रूव किया गया. उसमें क्या ऐड किया गया? एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया सी फ्लोर के स्प्रेड होने, फैलने का. दिस न्यू आइडिया वाज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स, फॉर्मुलेटेड इन 1960s. According to this theory, the earth has a rigid outer layer known as the lithosphere. और इस थ्योरी, जो इम्प्रूव थ्योरी थी वेगनर की, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अर्थ, उसमें बताया गया कि अर्थ का एक रिजिड आउटर लेयर होता है जिसे कहा जाता है लिथोस्फीयर. द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू अबाउट 6 लार्ज प्लेट्स एंड 20 स्मॉल वंस. और ये जो लिथोस्फीयर है ये आगे कैसे टूटता है, कितने तरह के प्लेट्स में है ये? It is broken up into 6 large plates. 6 बड़ी plates हैं और 20 small ones. These plates move constantly, typically at rates of a few millimeters per year. और ये जो plates हैं ये constantly move करती रहती है, धीरे धीरे कैसे move करती हैं? At a rate of few millimeters. Few millimeters move करती हैं ये per year, हर साल, and interact along their boundaries. Such interactions are thought to be responsible for most of Earth's seismic and volcanic activities. और ये जो अर्थ इंटरैक्ट किससे करती है? अपनी बाउंड्रीज से. जब ये मूव करती है अपनी बाउंड्रीज से इंटरैक्ट करती है, और इसी इंटरैक्शन से क्या होता है? अर्थ में seismic and volcanic activities होती है. When plates collide, mountains rise and volcanoes erupt. जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? ये माउंटेन्स जो हैं, ये माउंटेन्स इरप्ट होते हैं, बनते हैं, और वोल्केनोज इरप्ट होते हैं. When plates scrape and slide past each other, an earthquake occurs. और जब ये प्लेट एक दूसरे से टकरा के जब ये स्क्रैप करते हैं, छीलते एक दूसरे को, एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं, तो क्या आता है? earthquake. The different types of movements of the plates are due to various forces acting on it. और ये जो अलग अलग तरह की जो movements हैं, ये क्यों आकर होते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की forces लगती हैं. These forces are divided into 2 main categories. अब ये जो force लगता है इन plates पे, उसकी 2 categories हैं. The forces originating within the earth and causing horizontal and vertical movements are known as endogenic forces. जो फोर्सेस ओरिजिनेट कहाँ होती है? विद इन द अर्थ, अर्थ के अंदर, और उससे क्या कॉज होता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स, उसे कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक मूवमेंट्स कैन कॉज स्लो और सडन मूवमेंट्स. अब एंडोजेनिक मूवमेंट्स होती है वो धीरे भी हो सकती है और अचानक से हो सकती है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मेजर रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. और इसी कारण ये रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? जो एंडोजेनिक मूवमेंट्स होता है, इससे क्या फॉर्म होता है? क्या रिलीफ फीचर्स होते हैं? सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज एंड प्लेन्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. द सडन मूवमेंट्स कॉज वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स. और जो सडन मूवमेंट होते हैं, अचानक से जो मूवमेंट होते हैं, उससे वोल्केनिक इरप्शंस होता है और अर्थक्वेक्स आते हैं. द फोर्सेस व्हिच ओरिजिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ are called exogenic forces. और जो forces अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं उन्हें कहा जाता है exogenic forces. Weathering effects and erosions are examples of exogenic processes. जो weather होता है, soil erosion होता है, वो सारा exogenic process. Weathering is the breaking of rocks into tiny pieces. किसी भी force से जब वो rocks के tiny छोटे छोटे pieces हो जाते हैं, soil, sand due to action of wind and water, और
और किससे वेदर होता है? ये जो सॉइल वेदर होता है, इरोजन होता है, एंड सैंड भी इरोजन, सैंड एंड सॉइल का जो इरोजन होता है, ये सब एक्शन है विंड और वाटर. ओके. Now, volcanoes. What are volcanoes? Volcanoes are vents or openings in the Earth's crust through which molten materials such as lava, rock fragments, hot vapor and gases are ejected. तो volcano एक vent होता है या opening जिसे कहा जाता है, एक opening होती है या opening बन जाती है अर्थ के क्रस्ट पे, जहां से क्या निकलता है? molten materials like lava और fragments, hot vapors or gases बाहर निकलते हैं. Sometimes this opening can be a long crack which is called a fissure. कभी कभी तो ये ओपनिंग एक लंबी सी क्रैक के फॉर्म में होती है जिसे फिशर कहा जाता है. The mountain or the volcanic cone is formed when the erupted materials accumulate around the vent, solidifying upon cooling. अब माउंटेन या वोल्केनिक कोन कैसे बनता है? जब ये इरप्टेड मटेरियल्स जो बाहर निकलते हैं मटेरियल्स अर्थ सरफेस से, ये जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस ओपनिंग या वेंट के आसपास, और जब ये ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं. The vent is connected to the Earth's interior through a narrow pipe. ये वेंट अर्थ के इंटीरियर से किससे कनेक्टेड होता है? पतले से पाइप से. The funnel shaped hollow at the cone's apex is called a crater. और जो funnel shaped क्या होता है? हॉलो, जो ओपनिंग होती है, वो उसे क्या कहा जाता है? कोन के जो एपेक्स में होता है, इट इज कॉल्ड द क्रेटर. Volcanoes are generally found where tectonic plates are pulled apart or come together. Volcanoes कहाँ पे इरप्ट होते हैं? कहाँ होते हैं? जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स या तो अपार्ट जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, पुल्ड अपार्ट खिंचती है, और या पास में आती है, कोलाइड कर जाती है. They are also found where there is stretching and thinning of Earth's crust. और कहाँ होता है ये volcanoes? जहाँ जो stretching और thinning of Earth's crust होता है. अर्थ का जो crust है वो या तो stretch होता है या पतला होता है. Such as in the African Rift Valley, जैसे कि African Rift Valley. On the basis of the frequency of eruption, volcanoes are classified into 3 types. अब वोल्केनोज अपने इरप्शन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं. एक्टिव वोल्केनोज, these are currently erupting or have erupted recently, such as Mount St. Helens, Stromboli, which lies on an island near Italy, is a famous active volcano. Active volcano जो currently erupt हो रहे हैं या अभी recently erupt हुए हैं. Barren Island in the Andaman and Nicobar Islands is the only confirmed active volcano in South Asia. These are all the examples of active volcanoes. Active volcanoes are also called living volcanoes. इन्हें living volcanoes भी कहा जाता है. Dormant volcanoes. The next type is dormant volcanoes, also called sleeping volcanoes. इन्हें sleeping volcanoes भी कहा जाता है. These have not erupted recently but have the potential to do so again. वो अभी हाल फिलहाल में ही इरप्ट नहीं हुए हैं, रिसेंटली इरप्ट नहीं हुए, बट चांसेस है कि वो इरप्ट हो सकते हैं. Examples: Mount Kay of Hawaii and Vesuvius in Italy. Now, extinct volcano. Volcanologists do not think these will ever erupt again. जो volcanologists हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये सोचते हैं कि वो कभी भी अब इरप्ट नहीं होगा. ओके, कि ये जो वोल्केनो हैं, ये जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं, ये कभी भी इरप्ट नहीं होंगे. सच एज माउंट बुनिन्योंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड किलिमंजारो इन अफ्रीका. दीज आर द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. अब ये कभी इरप्ट नहीं होंगे. These volcanoes have not erupted for hundreds of years and are also called dead volcanoes. और ये hundreds of years पास हो गए हैं, ये volcanoes erupt नहीं हुए हैं, तो इन्हें और क्या कहा जाता है? dead volcanoes भी कहा जाता है. Distribution of volcanoes. The Pacific coast of Asia, North America and South America form a big circle which is called the Ring of Fire. अब जो एशिया
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट हैं, वो एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं जिसे कि कहा जाता है रिंग ऑफ फायर. द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज an area of frequent earthquakes and volcanic eruptions encircling the basin of the Pacific Ocean. और ये जो Pacific Ring of Fire है, ये वो एरिया है जहाँ पे frequently earthquakes और volcanic eruptions होते हैं. This ring coincides with the edge of the lithospheric plates. ये जो ring है, ये जो edge है lithospheric plate का, उससे coincide करता है. It gets its name because it has the biggest concentration of volcanoes. The Ring of Fire has 452 volcanoes and is home to over 50% of the world's active and dormant volcanoes. ये जो Ring of Fire है ना, इसमें 452 volcanoes हैं and 50% volcanoes जो हैं वो active हैं और या dormant volcanoes. 90% of the world's earthquake and 81% of the world's largest earthquakes occur along the Ring of Fire. अब इस Ring of Fire के चारों तरफ 90% जो वर्ल्ड का earthquake है वो occur होता है और 81% of largest earthquakes occur. The Volcanic Eruption Index (VEI) is used to measure the magnitude of a volcanic eruption. एक volcanic eruption का magnitude मेजर करने के लिए volcanic eruption index का यूज किया जाता है. The second belt of volcanoes is situated along the Mediterranean Sea and is called the Mid-World Mountain Belt. अब जो दूसरा बेल्ट है volcanoes का वो है along the Mediterranean Sea और उसको क्या कहा जाता है? Mid-World Mountain Belt. The volcanoes found here are mostly dormant or extinct. यहाँ पे जो volcanoes मिलते हैं वो ज़्यादातर या तो dormant होते हैं या extinct, dead volcanoes. Mount Fujiyama in Japan is one of the world's most beautiful volcanic mountains. The Deccan Plateau of India was most probably formed due to a fissure eruption. जो Deccan Plateau बना है ये fissure eruption से बना. Now we come to the earthquakes. What are these earthquakes? An earthquake is the shaking of the ground caused by the sudden release of energy in the earth's crust. अब ये जो earthquake है इसमें क्या होता है? Ground shake करता है. Shaking of ground होता है और किससे होता है? Sudden release of energy in the earth crust में अचानक से कोई energy release होती है, उससे ये earthquake. Earthquakes happen along faults or on the edges of different plates. Faults are breaks in a plate where pieces of rocks move. अब देखिए ये जो fault है ये कहाँ पे होते हैं? Faults are breaks in a plate में जब break आता है. When one tectonic plate slides over or past other plate along the line of the fault, it causes an earthquake. Now children, what happens जब एक टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड करता है दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर से along the line of fault. ये जो आप देख रहे हैं लाइन ऑफ फॉल्ट है, यहाँ से जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट पे स्लाइड करता है तो यहाँ पे अर्थक्वेक. इन द ओशन एन अर्थक्वेक कैन कॉज अ सुनामी. अगर ओशन में अर्थक्वेक आया है तो वो क्या कॉज करता है? सुनामी आती है. Earthquakes are also called tremblers. इन्हें tremblers भी कहा जाता है. The point inside the crust where the pressure is released is called the focus. अब crust के अंदर जो वो point जहाँ पे pressure release होता है, pressure release जहाँ से हो रहा है, उस point को कहा जाता है focus. The point on the Earth's surface vertically above the focus is the epicenter. अब जो उस पॉइंट के वो जो फोकस है वर्टिकली अबव जो पॉइंट है, फोकस ये है, इसके वर्टिकली अबव जो पॉइंट होता है वहां होता है एपिसेंटर. इट इज कॉल्ड एपिसेंटर. अर्थक्वेक एनर्जी इज रिलीज्ड इन सेस्मिक वेव्स. देखिए सेस्मिक वेव्स की तरह से रिलीज होती है एनर्जी. दीज वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द फोकस इन कॉन्सेंट्रिक वेव्स. अब ये वेव्स फोकस से स्प्रेड आउट होती हैं कॉन्सेंट्रिक वेव्स के फॉर्म में. These waves are going like this.
The waves are felt most strongly at the epicenter. और ये जो waves है, concentric waves, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? Strongly at the epicenter, जो just focus के ऊपर होता है, ये epicenter. Okay? यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है. Becoming less strong as they travel farther. और धीरे धीरे जब ये दूर जाती हैं तो ये इनका प्रेशर कम होता जाता है. Earthquake waves are classified into 3 groups on the basis of their mode of travel. अब ये जो earthquake की जो waves हैं, ये अपने mode of travel के हिसाब से इनको 3 groups में classify किया गया है. Primary waves, secondary waves and the surface waves. What are primary waves? Primary waves or P waves or push waves travel the fastest and thus are the first to arrive. ये जो primary waves होती है सबसे पहले आती हैं और इनको push waves या P waves भी कहा जाता है. Traveling at an average speed of 6 kilometers per second, these waves cause relatively small displacement, low turbulence. अभी जो P waves हैं ये traveling at an average, इसकी average speed कितने से travel करता है? ये 6 kilometers per second. Secondary waves are S waves or shake waves. Arrive the next, moving at lesser speed than the P waves. P waves से कम speed पे secondary waves आती हैं. These waves produce a strong shaking effect. लेकिन ये जो shaking effect होता है इसका, ये ज़्यादा strong होता है P waves. These do not pass through liquids. Liquid से pass नहीं करती हैं. Surface waves, the last to arrive, travel over the Earth's surface. These waves are very powerful. अब ये जो last जो waves हैं, surface waves, ये सबसे ज़्यादा powerful होती हैं and cause most of the damage, though with depth their energy diminishes. और जितना ये depth में जाती है, इसकी energy खत्म होती जाती है. These are of 2 types. ये भी surface waves 2 types होते हैं. Love waves, lateral motion, and relic waves, wave-like motions. Okay? Now, seismology is the science that studies the cause, mechanics, and phenomenon of earthquakes, and the scientists who study it are called seismologists. Now, children, what is seismology? Seismology वो science है that studies the cause or mechanics and phenomenon of earthquake. Earthquake का cause, earthquake की mechanics और इसका phenomenon जो है उसकी study को, उसकी science को seismology कहा जाता है. And जो scientists इसकी study करते हैं उन्हें कहते हैं seismologists. Okay? The Richter scale is graded from 0 to 9 and an increase of 1 point on the scale signifies a 10-fold increase in the intensity of the earthquake. 0 से 9 तक Richter scale पे grade किया जाता है. Okay? Earthquake of intensity 6 or more are very destructive. और 6 से ज़्यादा की intensity वाला जो भी earthquake होता है वो बहुत destructive होता है. On an average, 10,000 earthquakes are recorded each year. हर साल कितने earthquakes record किए जाते हैं? 10,000. Most of which are slow and mild. Some are not even noticed. ज़्यादातर इसमें से slow होते हैं और mild होते हैं और कुछ तो unnoticed होते हैं. Severe earthquakes can cause landslides in hilly terrains, cracks in Earth's crust, bursting of river dams, and blocking of rivers, raising or lowering of sea floor or coastal regions. जो सिवियर earthquake जब आता है तो उससे ये सब चीजें पॉसिबल है. लैंडस्लाइड होता है, क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट आता है, बर्स्टिंग ऑफ रिवर होता है, मेनी थिंग्स हैपन. ओके चिल्ड्रन, नाउ measuring earthquake. How to measure an earthquake? An earthquake's power is measured on Richter scale. इसे Richter scale पे measure किया जाता है. Seismograph is an instrument that measures and records information about earthquakes. और earthquake के बारे में जो information record करता है उस instrument को कहते हैं seismograph. Okay? Distribution of earthquakes. Earthquakes have a definite distribution pattern. Earthquake का एक definite distribution pattern है.
There are three major belts in the world which are frequented by earthquakes of varying intensities. अब 3 belts हैं, major belts in the world, जो कि इन earthquakes की various intensities से frequented होते हैं. Frequently वहाँ पे अलग-अलग intensity का earthquake. These belts are the Circum-Pacific Belt. The first belt is the Circum-Pacific Belt. This belt is located around the coast of Pacific Ocean. Pacific Ocean के coast के around ये belt located है. In this belt, the earthquakes originate mostly beneath the ocean floor near the coast. और इस belt में earthquakes ज़्यादातर कहाँ originate होते हैं? Beneath the ocean floor के अंदर नीचे. This belt experiences about 66% of the total earthquakes that are recorded in the world. पूरे world में जितने भी earthquakes record होते हैं, इस belt में 66% record किया जाता है. Most of the earthquakes occurring in this belt are shallow ones, with their focus about 25 km deep and are of high to very high intensity. ज़्यादातर earthquakes जो हैं वो इस belt में जो occur होती हैं वो shallow होते हैं, deeply, and उनका जो focus होता है वो 25 km deep होता है. The Mid-Atlantic Ridge Belt. Now, the next one, the second one is the Mid-Atlantic Ridge Belt. This belt is characterized by the sea floor spreading, which is the main cause of the occurrence of earthquake in it. अब इस belt में क्या होता है, जो sea floor है वो spread होता है, जो कि main cause है earthquakes. This earthquake belt runs along the mid-oceanic ridges and the other ridges in the Atlantic Ocean. In this belt, most of the earthquakes are of moderate to mild intensity. अब यहाँ जितने भी earthquakes आते हैं वो moderate से लेके mild intensity के होते हैं. Fine. अब 2 belts तो we have read. अब हम चलते हैं third belt, the Mid-Continental Belt. This belt extends along the young front of alpine mountain system of Europe, North Africa, through Asia Minor, Caucasus, Iran, Afghanistan and Pakistan to the Himalayan mountain system. अब ये belt extend करता है यहाँ से लेके इन सब जगहों. This belt experiences about 25% of the earthquakes in the world. और यहाँ पे पूरे world में जितने भी earthquakes आते हैं उसका 25% earthquake इस belt पे. The earthquake belt in India is mainly confined to the Himalayan region and Ganga Brahmaputra Valley. अब ये जो earthquake belt India का है, it is mainly कहाँ पे है? Confined to Himalayan region and Ganga Brahmaputra Valley. Okay? About 2/3 of India is earthquake prone. India का 2/3 part जो है वो earthquake prone है. During the last 5 decades, the Deccan Plateau in India has experienced earthquake turmoils. Though this region is considered to be a non-seismic zone and safe. अब during last 5 decades में क्या हुआ है? जो Deccan Plateau है India का, उसने एक्सपीरियंस किया है earthquake turmoils. और दो ये जो रीजन है, ये जो Deccan Plateau in India है, ये रीजन कंसिडर किया जाता है नॉन सेस्मिक जोन और सेफर जोन कहा जाता है. The latest version of seismic zoning map of India divides India into 4 seismic zones. इंडिया को 4 seismic zones में डिवाइड किया गया है, zone 2, 3, 4 and 5. Earlier, it consisted of 5 or 6 zones. पहले 5 और 6 zones में divided था, but now it is divided into 4 seismic zones. Fine, children. Now here's the glossary. Meaning of few words. Just read these words, okay, along with their meanings. Now, a quick review. What all we have read in this chapter. The lithosphere is broken up into about half a dozen large plates and 2 small ones. Volcanoes are vents or openings in the Earth's crust. Volcanoes के बारे में पढ़ा हमने. An earthquake is the shaking of the ground by the sudden release of energy in the Earth's crust.
We read about the earthquakes also. Erosion is the process involving movement of sediments from one place to another. Fine children, now let's do some exercise here, and here is your OMR sheet which you have to darken the circles, the correct answers. Darken the circle of correct option in OMR sheet. Which of the following instruments is used to measure and record information about earthquakes? Earthquakes के बारे में जो information है उनका record किससे किया जाता है? measure किससे किया जाता है? Richter scale, seismograph, anemometer, VEI. It is Richter scale. So tick on Richter scale. Exogenic movements are responsible for. Exogenous movements से क्या होता है? वो responsible किस लिए होते हैं? Mountains, weathering, plateaus, valleys. They are responsible for weathering. The belt located around the coast of the Pacific Ocean. अभी हमने 3 बेल्ट्स के बारे में पढ़ा, तो जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ जो बेल्ट है वो कौन सा बेल्ट है? Circum-Pacific Belt, Mid-Atlantic Ridge Belt, Mid-Continental Belt, Pacific Continental Belt. It is the Circum-Pacific Belt. Okay? The Richter scale is graded from 0 to 15, 0 to 5, 0 to 10, 0 to 9. It is 0 to 9. Fine. Which of the following is an active volcano? हमने अभी पढ़ा active volcano, dormant volcano, उनके बारे में पढ़ा था. तो active volcano इनमें से कौन सा है? Mount St. Helens, Mount Kay, Vesuvius, Kilimanjaro. Mount St. Helens is an active volcano. Now children, let's do some fill-ups here. Fill in the blanks. Few words are given in this box. Let's read them first. We have to fill in the correct words in the blanks. Endogenic, Alfred Wegener. Mauna Loa, Richter scale, seismology. Dash proposed the continental drift theory. Who proposed the continental drift theory? Alfred Wegener. So write down Alfred Wegener. Okay. The forces originated within the earth are known as dash forces. Those are the endogenic forces. Endogenic forces. Okay. The largest volcano on the earth is Hawaii's Mauna Loa. It's Mauna Loa. Dash is the science used to study earthquakes. It's seismology. So write down seismology. And the last one is power of the earthquake is measured on. It is measured on Richter scale. R-I-C-H-T-E-R. Richter scale. Okay. Now, say if the given statement is true, T, false, F. The lithospheric plates are static. Are they static? No, they keep on moving. So this is false, F. The Himalayas are young-fold mountains. Yes, true. The point of origin of an earthquake is known as epicenter. The point of origin. No, it is not the epicenter. False. Epicenter is the point from where it originates. Epicenter is the point above it. Okay. Now children, the next one is lava provides fertile soil. Yes, true. Flood plains are formed in the upper course of a river. False. It is formed in the lower course of the river. Now children, let's do some question answers here. Answer the following questions. How are earthquakes caused? Earthquakes कैसे आते हैं? क्या cause है उनका? Due to the movement of the tectonic plates, which creates the seismic waves that shake the ground, causing earthquake.
जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो सेस्मिक वेव्स क्रिएट करती हैं और उससे जो ग्राउंड है वो शेक होता है. What are volcanoes? How do they erupt? The volcanoes are the openings in the earth's crust where molten rocks, ash and gases can escape from below the surface. Now what is continental drift theory? Children, just now you have read about the Wagner's continental drift theory, Alfred Wagner's continental drift theory. तो एक बार फिर से चैप्टर को रीड करेंगे और वो जो थ्योरी है पूरी एल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है उसको दोबारा अच्छे से रीड करेंगे एंड देन राइट डाउन द थ्योरी. एंड हु प्रपोज्ड इट? इट वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वैगनर. व्हाट आर डोर्मेंट वोल्केनोज? क्या होते हैं डोर्मेंट वोल्केनोज? वोल्केनोज which are currently inactive but they have the potential to erupt again in the future, anytime in the future. Now write a short note on the distribution on earthquakes. Earthquakes का distribution कैसे किया गया है? The earthquakes have been distributed in 3 belts according to the intensity of the earthquake. So the 3 belts are the circum-Pacific belt, the mid-Atlantic belt, the mid-continental belt. So again just go through these 3 belts, कैसे इसको divide किया गया है earthquakes को in 3 belts में, and then write it down, then explain it and write it down. Fine children? So here we end up with our chapter, and how was it? It was great learning about the earthquakes, the volcanoes, how the volcanoes erupt and how the earthquakes happen, what happens when the tectonic plate moves, and many other things we have read in this chapter. So children, stay tuned for the new video. We'll meet soon with what? With a new chapter. Till then, be happy, stay blessed. Bye.